Okay. So in D and F block elements, the first thing that you will be seeing is, first type of question that you will be seeing is regarding the transition metals. Okay. So what are transition metals? Transition metals are those which have, it should have partial deconfiguration. Okay. So incomplete D subshells should be there. That means it should be D1 to D9. Please remember D10 or D0. If you have D10 or if you have D0, then it is not. Excuse me, sir. Transition metal. Yes, tell me. Sir, can someone tell me how many pages I should leave? For what? Because I didn't finish the complete coordination compound, but I did little bit of it. तो आपने I कहाँ did तक किया some important terms. We did one question, no, designate the coordination entities and counter ions. That one. यानी कि I think फर्स्ट ही क्लास में आप ना? Yeah, ये class में. Second class में. सेकंड क्लास में? Yeah. नहीं, फर्स्ट क्लास है ये तो. No. ये सवाल है ना? Yes, sir. Yeah. So इसके बाद how many pages should I leave? Razan, can you please tell Fatima how many pages should she leave? 16 pages. Thank 16? you very much, and I'm very sorry. No problem. Okay, see here. Now, if you have D10 or D0, then it is not going to be transition metal. Now, D1 to 9, either in neutral state, or if you have D1 to 9, or if you have D1 to 9 in the ion form, in ionic state. Okay, that is why if you see zinc, cadmium, and mercury of group 12, they have full D10 configuration in ground state as well as their common oxidation state. That is why these are not regarded as transition metal atom. ठीक है, तो ये important है. Zinc, cadmium, and Hg. These are what? These are not transition. These are not transition metals. ठीक है, please remember this. These are not transition metals. तो आपके पास MCQ में ये सवाल बन सकता है, like take the one which is a transition metal. तो उसमें zinc, cadmium, Hg और साथ में मान लीजिए आपके पास Mn दिया हुआ है. You will take the Mn part. So you have to remember this. ठीक है ना? Zinc, cadmium, and Hg. These are not transition metals. You have to remember this. ठीक है? Zinc, cadmium, and mercury. Zinc, cadmium, and mercury. Zn, Cd, Hg. These are not transition metals. ठीक? First thing is this. Then the next is the general electronic configuration of the D block. In the general electronic configuration of the D block, you have to remember you will have Ns 1 to 2 and N minus 1. N minus 1D will have 1 to 10 electrons. And slowly it is going to fall. 1 to 2 क्यों लिखा है? If you remember the 3D series, in 3D series you have two elements. You have chromium and you have copper. Chromium has a configuration of what? It has a configuration of 3s1. Sorry. This is 4s 3d5. And copper has a configuration of 4s1
3d10. That is why NS can have, the S subshell will have 1 to 2 electron. Maximum आपके पास 2 हो सकते हैं, minimum यहाँ पे 1 electron होगा in the ground state. And as we move on from scandium, titanium, vanadium, chromium, manganese, Fe, cobalt, nickel, and so on, the number of electrons in the D subshell is going to increase, as you can see here. 1 electron, 2 electron, 3 electron. Here you have 5 electrons. Why? Because half filled is more stable, and you have here 1 electron, and then 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay. So again, please remember, we have 2 elements which are important: the chromium and copper. Okay, chromium and copper का exceptional electronic configuration होता है. Remember that. This is there in electronic configuration. Next, please see. And you can see this question आपके पास NCERT में है, ठीक है ना? On what ground you can say scandium is Z21? तो आप लिखिएगा 21. That means the electronic configuration is going to be 4s2 3d1. Since it has incomplete D subshell, we can say that it is a transition metal. It is a transition metal. Okay. Now, one more important thing that you have to remember is that when you have DN configuration, they have similar magnetic and electronic properties. Okay. They are going to have similar and electronic properties. Now, see in physical properties. In physical properties, if you see the melting points of these metals are going to be high. And why it is high? What is the reason? It is due to large number of N-1 D electrons and NS electrons. Since you have N-1 D electrons and NS electron in the outermost shell, the outermost shell, if it has large number of electrons, then the metallic bond in them has a sea of electrons. And here you have metal, it has a sea of electrons. And if the number of electrons between two metals are very high, that means they are going to have a good metallic bond. And if there is a good metallic bond, it will be difficult to separate these two metal atoms, and that is why it is difficult to melt them also. And since it is difficult to melt them, that means it is going to have higher melting point. And that's the point that is written here. The high melting of these metals are attributed to the involvement of greater number of electrons in N-1 D in addition to NS electrons in the interatomic metallic bonding. In any row, the melting point of these metals rises to the maximum at D5, क्योंकि आपके पास N-1 में, that is sorry, in N-1 D, you are going to have increase in the number of electrons, and NS में आपके पास number of electrons is going to be same. Okay. Now, since you are going to have, when you have N5, all of these electrons are what? All of these electrons are unpaired. That is why at D5, it is going to be what? It is going to be highest. Except in the case of, there is some anomalous cases, that is magnesium, manganese, and tactisia, and fall regularly as the atomic number increases. They have high enthalpies. Now, next point is enthalpy of. This reason is important. Due to large number of N-D and NS electron. This can come in assertion and reason questions. Okay? Assertion region में क्या सकते हैं? एक statement होगा. The D block elements, they have high melting point, and the reason they would have given, let us suppose they have given this reason only, that there is large number of N-D electrons and NS electron. That means assertion and reason both are correct, and reason is the right explanation for the assertion. Next point is the enthalpy of atomization. In atomization, what happens? For example, if you have, let us suppose, manganese metal, that is will be in solid state. Now, when you have manganese in solid state, there will be plenty of manganese atoms which are near to each other. So you are going to heat it, or you are going to do some kind of chemical process, and you have to convert it to manganese gas. When you have manganese gas, that means what we have taken, we have got one atom of manganese. This is known as atomization. Now, the enthalpy of atomization is it has a similar trend if you compare it with the melting point also. Because, I mean, here also you are going from solid and you are removing all the
metallic bonding. You are breaking all the metallic bonding. Okay. Now, please see, they have high enthalpies of atomization, which is shown in figure 8.2. The maxima at about the middle of each series indicate that one, this is important, indicate that one electron orbital is particularly favorable for strong interatomic interaction. Okay? That means what is important? It is not important to have large number, rather it should have large number of unpaired electrons. If you have large number of unpaired electrons, that is favorable for strong interatomic interaction. Favorable for strong interatomic interaction. So what is favorable for interatomic interaction for the metallic bonding? Large number of unpaired electrons in the d subshell. And the d subshell itself have large number of interatomic interaction. Now this is the plot for enthalpy of atomization. Okay. Next is variation in atomic sizes and ionic sizes of the transition metals. Now, in general, ions of the same charge in given series show progressive decrease in the radius with increase in atomic number. I mean, this is common with, if you go inside a period, if you are going, the atomic number is increasing. And since the atomic number is going to increase, more positive charge is there in nucleus. And that is why what is going to happen? The size of the atom is going to shrink. So that's what's written here. Show a progressive decrease in the radius with increasing atomic number. As the atomic number increases, the nucleus, it has higher potential to attract the electrons. And if it is attracting the electron, the atom is going to shrink. The atomic size is going to decrease, and that is why there will be a decrease in the radius. This is because, as you can see here, this is because the new electron enters the d orbital. Each time the nuclear charge increases by unity, it may be recalled that the shielding effect of the d electron is not as effective. Hence, the net electrostatic attraction between, this is important, net electrostatic attraction between the nuclear charge and the outermost electron increases. And the ionic radius is going to decrease. Same trend is observed in the atomic radii of the given series. Now, and the variation within the series is however small because आपके पास d shell में आपके पास electron जा रहे होते हैं. Next is when you go to 3D to 4D, an increase from the first 3D to second 4D series of element, but the radii of the third 5D series is virtually same as those of corresponding members of the second series. इसका क्या मतलब है? You have 3 series in the D block. एक आपके पास 3D series, which is the most important one, जहाँ पे आपके पास scandium, titanium, vanadium, and all of these elements are there. Then you have the 4D series. Then you have the 5D series. When you go from 3D to 4D series, the increase in atomic size is visible, quite visible. Okay. And obviously it is, I mean, we were expecting an increase in the atomic radii and ionic radii because we are going from third to fourth, है ना? अब third series से कहाँ जा रहे हैं? Fourth series में जा रहे हैं. So obviously, when you are increasing the period, then it is going to be, there will be an increase in the atomic size. Period increase करना यानी कि the outermost shell is what? The outermost shell आपके पास एक बढ़ जा रहा है. Here the outermost shell is going to be 4 and here the outermost shell is going to be 5. ठीक है? Because 3D है तो 4s होगा and 4D है तो 5s होगा. And since you are increasing the principal quantum number, तो आपको obviously there will be an increase in size. But when you go from 4D to 5D, we are expecting an increase, but virtually there is no increase. It is almost same as 4D series. Now, why is this happening? There is one word that you should remember. Why is this happening? Why is the atomic radii of 4D equal to 5D, almost equal to 5D? This is because of lanthanide contraction. Now, what is lanthanide contraction and why? And why is lanthanide contraction responsible for the same atomic sizes of 4D and 5D series? Please listen very carefully. Here comes the concept of shielding effect of the different subshells. If you compare S subshell, P subshell, D subshell, and F subshell, then if I compare the shielding effect, S subshell has the most shielding power, then P, then D, and then F. Due to the low shielding effect of F subshell, due to that low shielding effect, we have the 4D and 5D series. They are going to have similar atomic radii as it is written here. Because यहाँ पे देखिए 5D series में क्या होता है? 5D series में after 4D series, once you have filled the 4D series, before you are going to fill,
See, the filling of 4f before 5d orbital results in regular decrease in atomic radii called lanthanide contraction, which essentially compensate for the expected increase in atomic size with increasing atomic number. Okay. What we are filling the F subshell, and F subshell has low shielding effect. That is why जो आपके पास metal atom का the number of the atomic number is increasing, but the same increase is not seen when you compare with the size of the shell. Okay, why the size of the shell is not increasing? Because the F subshell it is not going to shield the electrons as effectively as the D or the P or the S subshells. Okay, so please remember this word. Lanthanide contraction. ये अभी आपके MCQs में आ सकता है. If they ask you, the 4D and the 5D series, they have similar sizes. है ना? Assertion region में भी आ सकता है. They will say because of lanthanide contraction, or they will say the filling of 4f before 5D orbitals result in regular decrease in atomic radii. है ना? So these two statements can be given, and you have to write for assertion and reason questions. ठीक है? This is the important part. Okay. Lanthanide contraction, 4D and 5D, they have similar sizes. As you can see in this graph also, this third is this graph for, this is the 3D series. And this red and blue, this is 4D. Sorry. This is 5D and this is 4D. As you can see that it is going to be, it is very similar. जो increase आपने देखा है 3D से 4D में, same type of increase is not seen in the 5D series. Okay. Now, the decrease in metallic radius coupled with the increase in atomic mass results in general increase in density of these elements. Thus, from titanium to copper, the significant increase in density may be noted. So obviously, if you are going, what is happening here? As in 3D series, if I go like this, the atomic number is increasing. Size is decreasing. If I talk about mass, the mass is also increasing. See, mass is increasing. And if I divide it by volume of the volume, what is happening to volume? Volume is decreasing. So mass increase kar raha, volume decrease kar raha. That means obviously density is what? Density is going to be very high. Density of these metals is going to be very high. Now, see next. As you can see, this question, it is related to the unpaired electrons. Hai na? Exhibit higher enthalpies of atomization because of large number of unpaired electrons in their atoms. See next, ionization enthalpy. What is ionization enthalpy? Ionization enthalpy, that's written by delta HI. It is what? The energy required to remove electron from outermost shell. Okay. Please remember outermost shell. So generally speaking, if I have some metal and if I have +1, then I have to remove from NS subshell. Please remember, because NS पहले आएगा, है ना? अगर हम मान लीजिए देखें, for example, if you have iron has atomic number of 26. It has electronic configuration of 4s2 3d6. If I write Fe plus, then it will be 4s1 3d6. If I write Fe2 plus, then it will be 4s0 3d6. Now, when I write Fe3 plus, then it is going to be 4s0 and 3d5. ठीक है? सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहां से निकलेगा? It should be removed from the s subshell. And if there is further ionization happening, then you will remove the consecutive, then you will remove the next electron. If it is in the s subshell, you will remove from s. If it is not in the f subshell, then you are going to remove from the d subshell. Now, यहाँ पे important है आपके पास. Please remember, whenever if you are asked about the ionization enthalpy, why it is high, why it is low, remember that if you are going from incomplete to either half filled or fully filled. Fully filled तो बहुत कम केसेस नहीं होगा, आपके केस में नहीं होगा. If you are going from incomplete to half filled, then it will be easy because half filled is more stable. It will be easy and ionization enthalpy is going to be low. But if you are going from half filled to some incomplete cell, then in that case, delta HI is going to be high. Okay, that means the delta HI is going to be high.
Now, please see. As we move along the period in 3D series, we see that nuclear charges increases from scandium to zinc, but electrons are added to the orbital of inner subshell. कौन से subshell में add कर रहे हैं हम? Third shell में add कर रहे हैं. 4 में नहीं add हो रहा. We are adding in the third shell. These 3D orbitals shield the 4s electron from the increasing nuclear charge and somewhat more effectively than the outer shell electrons can shield one another. Therefore, the atomic radii decreases rapidly. Thus, ionization energy increases only slightly along the 3D series. आपके पास क्या होगा? Obviously, it is going to increase because the size is going to be smaller. Now, a general trend of increasing values of second ionization enthalpy is expected as effective nuclear charge increases because one d electron does not shield another d electron from the influence of nuclear charge because the orbitals differ in direction. However, trend of steady increase in second and third ionization enthalpy breaks for the formation of Mn2 plus and Fe3 plus respectively. In both cases, ions have D5 configuration. This is important part. दो cases हैं आपके पास, Mn2 plus and Fe3 plus. Mn2 plus and Fe3 plus. Please see here. Mn2 plus will have the electronic configuration of what? Electronic configuration Mn2 plus का होगा 4s0 and 3d5. And if you go from Mn2 plus to Mn3 plus, then आप क्या कर रहे हैं? You are going from half filled to incomplete. So this will be what? Delta Hi is going to be very high. But if you go from Fe2 plus to Fe3 plus, the delta Hi is going to be low. Why? Because we are going from incomplete to half filled. So this is more stable. That is why it can easily go from Fe2 plus from Fe3 plus. Now, they will ask you Mn2 plus to Mn3 plus, delta Hi is higher than delta Hi of Fe2 plus, even though Fe has higher atomic number. है ना? Generally क्या होना चाहिए? When we are going from in a period from left to right, the ionization enthalpy should increase. Why? Because the size is getting smaller. Fe has smaller size, so it should be difficult for us to remove the electron. But why is Fe having lower ionization enthalpy even though it has higher atomic number and smaller size? Then you will say that because if I go from Fe2 plus to Fe3 plus, Fe2 plus is incomplete shell, but Fe3 plus, when we ionize Fe2 plus, we get Fe3 plus, which is half filled and it is more stable. And since it is more stable, this process is going to be easy, and that is why there will be low ionization enthalpy. Okay. Now, there are three things which are responsible for ionization enthalpy. These are attraction of each electron towards nucleus. If the attraction is high, okay, if this is high, delta Hi should also be high. Okay. The repulsion between the electrons. What is repulsion between electrons? Repulsion between electrons का मतलब दो इलेक्ट्रॉन के बीच में कितना repulsion? If the repulsion is high, ionization enthalpy will be low. And the last thing is exchange energy. Exchange energy is related to half filled and fully filled. Okay, half filled and fully filled. Right. यहाँ पे कुछ सवाल हैं that I think you should remember. For example, Mn positive has 3d5 4s1 configuration, and the configuration of Cr plus is d5. Therefore, ionization enthalpy of Mn plus is lower than Cr plus. ठीक है ना? तो आपके पास एक important क्या सवाल है? Delta Hi of Mn positive versus delta Hi of Cr positive. ठीक है? Then एक सवाल जो हमने अभी किया है,
Fe2 plus and Mn2 plus delta Hi of Fe2 plus versus delta Hi of Mn2 plus. Okay, these are important. ऐसे याद रख लीजिएगा. You have chromium, you have manganese, and you have iron. इन दोनों का प्लस प्लस, इन दोनों में जब कंपेयर कर रहे हैं तो +2 and +2. So when I compare chromium and manganese, तो chromium का ionization enthalpy is lower. ठीक है, मैग्नीज हाँ मैग्नीज का लोअर है, क्रोमियम का ज्यादा है. एंड इस केस में आपके पास +2 और +2 में अगर हम देखें तो Fe2 plus is lower, है ना. Fe2 plus is lower and manganese is higher. Why is that? Because in this case when you have chromium positive का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? Chromium plus का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन is going to be 4s0 and 3d5. तो ज्यादा स्टेबल है. If you remove one electron, that means you are going from half filled to something incomplete. Mn positive is going to be 4s1 3d5. अब यहाँ से अगर हम इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, then you will be getting 4s0 and 3d5, which is more stable, and that is why it is easier to remove electron from Mn positive, है ना? And that is why its ionization enthalpy is low. Please remember these three things: chromium positive, Mn positive versus इन दोनों के बीच में, and Mn2 positive versus Fe2 positive. I think there will be some question also here. Okay. Now see here, they will ask you which transition metal does not have variable oxidation state. Okay, तो ये completely remembrance वाला सवाल है. आप बस ये ध्यान रखिएगा, दो ही एलिमेंट हो सकते हैं, या तो स्कैंडिनियम हो सकता है या तो जिंक हो सकता है, which will not have variable oxidation state. Now zinc is not a transition element, right? It is not a transition metal. That is why scandium ही ऐसा है जिसके पास क्या हो सकता है, which will have not a variable oxidation state. Otherwise each of them is going to have variable oxidation state. ठीक है, each of them is going to have variable oxidation state. The variable oxidation state में start from highest oxidation state देखिएगा, +3, +4, +5, +6 and +7. If you see this increase, then it is completely related with the number of electrons in the outermost shell. It has NS1 and number of electrons in the D subshell is NS2 and D1. This is S2, D2, that is why 4. There are 4 outermost electrons, and that is why when you remove 4 electrons, you will get +4. Here you will have S2 and D3. Here you will have S1, D5. Here you will have S2, D5. Okay? So all of these is related to what if they ask you, if they are going to ask you that why is it you are having high oxidation state, then you will say that it is related to number of electrons in NS as well as N-1D subshell. Okay, they will ask you why do transition metals, they show variable oxidation state. They show variable oxidation state that because of the number of electrons in NS as well as N-1D subshell. Okay, both of these can be ionized. That is why they show variable oxidation state. ये सवाल आपके पास है यहाँ पे. Transition element which does not exhibit variable oxidation state. Which of the 3D series transition metals exhibit the largest number of oxidation state? Largest number of oxidation state is given by manganese. Why? Because it has S2 and D5 configuration. S2 and D5 configuration. And its answer is also written here. यहाँ पे देख लीजिए. The elements which give greatest number of oxidation state occur in or near the middle of the series. Manganese, for example, exhibits all the oxidation state from +2 to +5, +2 to +7.
This part is more important. Standard electrode potential. यहाँ पे standard electrode potential किसका देख रहे हैं हम? M2 positive to metal. ठीक है? This is the standard electrode potential. अब ये आप बताइए, जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है वो क्या होता है? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होता है या फिर स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है? इफ यू रिमेंबर फ्रॉम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, टेल मी गाइस. स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज रिडक्शन पोटेंशियल. Reduction potential. ठीक है, ध्यान रखिएगा. इट इज व्हाट? रिडक्शन पोटेंशियल. ठीक है, इट इज रिडक्शन पोटेंशियल. अच्छा, मेटल का रिडक्शन पोटेंशियल क्या होना चाहिए? मेटल आसानी से इलेक्ट्रॉन देगा या आसानी से इलेक्ट्रॉन लेगा? metal has a tendency to lose electron या gain electron? Metal has a tendency to, sorry once again, lose electrons. Lose electron. अगर कोई इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, फॉर एग्जाम्पल इफ यू हैव सोडियम, है ना, इट लूजेस इलेक्ट्रॉन, सो इट विल गेट Na पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन. बताइए मेटल का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है? व्हाट इज दिस? है ना, ऑक्सीडेशन. तो मेटल की टेंडेंसी क्या होती है? ऑक्सीडाइज होने की. दैट मींस SOP, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होगा मेटल का? पॉजिटिव होगा. दैट मींस इफ यू ऑक्सीडाइज अ मेटल इट शुड गिव यू इलेक्ट्रिसिटी. और SRP क्या होना चाहिए? नेगेटिव होना चाहिए. इज दैट क्लियर? यस और नो? प्लीज टेल मी गाइस. Yes, sir. यहाँ तक क्लियर है सबको? आया ना? क्लियर ना? नाउ you see this graph, you will see that टाइटेनियम से लेके जिंक तक इन्होंने ट्रेस किया है. All of them, this is 0, minus 0.5, minus 1, minus 1.5. All of them have what? Minus oxidation state, है ना? Minus oxidation state. सबका क्या है? Minus oxidation state है, except that of copper. ठीक है? Copper has positive value of E0. ठीक है? Positive values of E0. Yes or no? Please tell me. Can all of you see that? Right? Yes or no? Yes, sir. ठीक Yes, है. sir. अब इसके साथ क्या क्या? ठीक है ना? Now, what is the consequence of this? The consequence is that this accounts for its inability to liberate H2 from acids. ठीक है? आपसे पूछा जाएगा कॉपर जो है, if I add copper to some acid, it does not give us hydrogen. Why does it not give hydrogen? Because it has positive value of E0. Its standard reduction potential, standard electrode potential is what? It is positive, and that is why it is not giving hydrogen gas when I react with acid. And that is why copper is what? It is inactive. है ना? कॉपर क्या है? इनएक्टिव मेटल है. और बाकी सारे क्या है आपके पास? अगर आपको याद हो, दो तरह के मेटल थे. There were wedding elements and there was Chapa elements, right? Wedding elements क्या थे? Active. They gave hydrogen gas when you added any acid, but Chapa elements were inactive. ठीक है? ये these do not give hydrogen gas. Now, another thing is that इसका why is copper having high value of E0? ठीक है? Why is copper having high value of E0? Now, when you see E0 reduction में आपके पास क्या होता है? If you have a metal, it is solid, और आपको क्या चाहिए? M, some N positive in aqueous state. Now, it is not a single process, it is multiple process. सबसे पहले आप देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे. You're going from मेटल सॉलिड से आप जा रहे हैं सबसे पहले मेटल गैस. ठीक है? मेटल गैस से आप क्या कर रहे हैं? मेटल N positive, and still in gas, and then you are going from this Mn positive gas to aqueous. And when you go from Ms to gas, this is delta H of atomization. When you go from gas to N positive, what we are doing? Delta H of ionization. We are doing ionization. When N positive to aqueous, it is going to be what? This is going to be delta H of hydration. ठीक है? Now, when you go from solid to gas, आप एक बात बताइए, delta H atomization में energy will be released or energy will be required?
गोइंग फ्रॉम सॉलिड टू गैस, क्या लगता है आपको मेटल को अगर सॉलिड से गैस में कन्वर्ट कर रहे हैं, सो एनर्जी विल बी रिक्वायर्ड और रिलीज्ड, टेल मी, एनर्जी विल बी रिलीज्ड या रिक्वायर्ड, सॉलिड से गैस, सॉलिड से गैस, सॉलिड से लिक्विड, कोई भी मेटल ले लीजिए, सोचिए उस तरह से, एनर्जी आपको देनी पड़ेगी, हीट आपको देना पड़ेगा, या फिर हीट विल बी रिलीज, अपने आप हो जाएगा ये रिएक्शन. दिस चेंज फ्रॉम सॉलिड टू गैस विल बी ऑन इट्स ओन, और यू हैव टू गिव सम एनर्जी. टेल मी, क्या लगता है? You have to give energy. You have to give energy, right? You have to give energy. That means it is going to be endothermic. Now, what about delta H ionization? This should be what? Endothermic या exothermic? इलेक्ट्रॉन निकालने में एनर्जी रिलीज होगी या फिर एनर्जी देना पड़ेगा? बताइए. If I am removing an electron which is under the influence of a nucleus which is positively charged, then we have to give energy, yes or no? Yes, sir. This is also endo. Now, what about this? Delta H hydration. What is hydration? Enthalpy of hydration means you have some M positive and the water molecules are having some kind of bond with this positively charged metal ion. ठीक है. Now, whenever you have attraction, ना, ये तो attraction है because oxygen is delta negative because of its higher electronegativity. Whenever you have attraction, it is going to release energy. Whenever there is a release in energy, delta H hydration is going to be exothermic. ठीक है. Delta H hydration is going to be exothermic. Now, delta H hydration is the only factor because of which most of the metals have negative E naught. ठीक है. उनका क्या होता है? Negative E naught होता है. That means they have a tendency to get oxidized. They have a tendency to do what? They have a tendency to get oxidized. For copper, what happens? This delta H hydration is not large enough to compensate delta H atomization and delta H ionization. That is a line that is written here. ठीक है. आपको ये ध्यान रखना है कि whenever we write E naught reduction या E naught oxidation, it is not a single process. एक step वाला चीज नहीं है. Whenever we are calculating, it is three different things: atomization, ionization, and hydration. ठीक है. That's what written here. This line is important. The high energy to transform copper solid to copper aqueous is not balanced by its hydration enthalpy. That is the reason why copper has positive value of E naught. ये यहाँ पे. ठीक है. आपको ये लिखना है. They will ask you why is E naught of copper 2 plus positive. Then the answer is this: the high energy to transform copper solid to copper 2 plus aqueous is not balanced by its hydration enthalpy. Okay. Now see next. This is important. इसको देख लीजिए. Why is Cr2 plus reducing and Mn3 plus oxidizing when both have D4 configuration? ठीक है. Cr2 plus का configuration क्या होगा? It is going to be 4s0 3d4 एक बार एक. Then you have Mn3 positive. This is also 4s0 3d4. क्या बोला इन्होंने? Why is Cr2 plus reducing in nature? Cr2 plus क्या है आपके पास? Reducing. Reducing का मतलब क्या हुआ? It is going to get oxidized. It is a reducing agent. यानी कि ये खुद क्या हो रहा है? Oxidize हो रहा है. तो Cr3 plus. तो यहाँ पे ये D4 से कहा जा रहा है D3 जा रहा है. Okay. It is going from D4 to D3. Now, is D3 stable? Yes.
D3 in aqueous it is going to be stable. जब भी हम oxidizing agent, reducing agent की बात करते हैं, then means we are talking about what? We are talking about E naughts. And whenever we have E naughts, we are talking about what? Going from a particular state to aqueous state. And D3 aqueous is going to be stable because it has stable T2G3 half-filled shell. T2G3 half-filled. इतना लिख दीजिएगा. All of you remember, yes or no? Please tell me T2G. अगर आप देखिए D3 को, D3 आपके पास कैसे होगा? It will have the EG level and the T2G level. Aqueous में तो water is the ligand here, and you have 1, 2, and 3 electrons. These 3 electrons is what? It is half-filled T2G3 level. है ना? T2G3 क्या है? T2G क्या है यहाँ पे? It is going to be half-filled in D3. That is why it is stable. Now, when we come to Mn3 plus is D4. Mn3 plus is D4 and it is oxidizing nature. That means Mn3 plus से ये क्या हो जाएगा? Mn2 plus reduce हो जाएगा खुद. That means it is what? It is an oxidizing agent. हाँ? ये लिखा है Mn3 plus is what? It is oxidizing. That means it is itself getting reduced. So it is going from D4 to D5. And yes, D5 is half filled. Therefore stable. ठीक है. I think फातिमा को ये T2G नहीं सुना होगा फातिमा ने पहले, but I hope all of you who are here they know what is T2G level, है ना? तो whenever you have, if you see, अगर ये इन्होंने खुद कहा ना कि Cr2 plus है Cr3 plus it is going to be, ये खुद हो रहा है, and you see D3, आपको ये प्रूफ करना है कि D3 stable है. So whenever you see D3 stable, why it is going to be stable? Because T2G level is half filled. ठीक है, प्लीज रिमेंबर दिस. जब भी आपके पास D3 होगा इट इज गोइंग टू बी स्टेबल, तो आप हमेशा याद रखिएगा T2G लेवल इज हाफ फिल्ड, दैट इज व्हाई इट इज स्टेबल. ओके, नाउ सी नेक्स्ट. ये था आपके पास, दिस वाज ऑल अबाउट स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ M2 plus 2M. We have seen 2 plus 2M. एक है आपका 3 plus 2 2 plus. Friends, in the standard electrode potential of M3 plus to 2 plus. Okay, here please see. The comparatively high value for Mn shows that Mn2 plus D5 is particularly stable, whereas comparatively low value for Fe shows that extra stability of Fe3 plus, and comparatively low value of V is related to the stability of half-filled T2G level. ठीक है, यहाँ पे तीन चीजें आपको ध्यान रखनी है. First is Mn2 plus is stable. Therefore, Mn2 plus, sorry, Mn3 plus से 2 plus is easy. Therefore, high value. ठीक है, therefore it is going to have high value. Then you have Fe3 plus is stable. Therefore, Fe3 plus से Fe2 plus is difficult. Therefore, low value. ठीक है, therefore it is going to have low value. Then you have V2 positive, है ना? V2 positive is stable. V2 positive stable है आपके किस वजह से? D3 configuration है, ठीक है? It is going to be D3 D3 क्या होगा मतलब? Half filled T2G. V2 positive is stable. Therefore, V3 positive say V2 positive
is difficult. No, wait a second. Is easy, no? It's easy. Not 15. 650, 415. Okay, this is Mn2 plus M2 plus K. Okay, so these are the important parts. Then you have the highest value for Zn is due to the removal of an electron from the stable D10 configuration. Then low value of scandium reflects the stability of Sc3 positive, which has noble gas configuration. Okay, you read this part. It is all related to half-filled D5, or it is related to mostly D3, where you have half-filled T2G level. Okay, see next. In trends in the stability of higher oxidation state. 3+ तक तो बात कर लिया हम लोगों ने. You have seen till 3+. What about higher oxidation state? If you see in higher oxidation state, the highest oxidation state oxidation number are achieved in TiX4 tetrahalides, VF5 and CrF6. The +7 state of Mn is not represented in simple halides, but in MnO3F is known, and beyond Mn no metal has trihalide except FeX3. एक इसमें important question है, इसको हम लिखवा देंगे अभी. एक second. I think it is below. This is one question which is important. All copper 2 halides are known except the iodide. In this case, copper 2 plus oxidizes I minus to I2. Okay? This is important. Where many copper 1 compounds are unstable in aqueous solution and undergo disproportionation reaction. Okay, this is also important. 2 copper plus, it converts to copper 2 plus and copper. Now, the stability of copper 2 plus aqueous is rather than copper plus is due to the much more negative delta H hydration of copper 2 plus than copper plus, which more than compensate for the second ionization enthalpy of copper. ठीक है, यहाँ पे एक चीज ये इंपॉर्टेंट इसको लिखिएगा. Delta H hydration of copper 2 plus is very high compared to कॉपर प्लस. ठीक है, तो कॉपर 2 प्लस में जो आपको हाइड्रेशन मिल रहा है दैट इज वेरी हाई. दैट इज व्हाई देयरफॉर कॉपर प्लस इट कन्वर्ट्स इटसेल्फ टू कॉपर 2 प्लस. ठीक है, राइट दिस डाउन. एक आपका सवाल इससे जो बनता है, all copper 2 plus halides are known except copper iodide. The answer for this is it happens because copper 2 plus oxidizes I negative, that is iodide, to iodine.
तो यहाँ पे दो सवाल है, दिस इज इम्पोर्टेंट। एक तो आपके पास कॉपर 1+ इज अनस्टेबल इन एक्वस, इसका क्या सवाल, दिस इज क्वेश्चन हियर इज कॉपर +1 is unstable in water. Why? Because it gives disproportionation reaction. Why does this disproportionation reaction happen? Delta H hydration of copper 2+ is very high compared to copper plus, and that is why it compensates for the second ionization enthalpy of copper. ठीक है, you have this. प्लीज इसको ये वाला सेक्शन प्लीज पढ़िएगा, ठीक है ना, यहाँ से बहुत चांसेस है सवाल आने के. Then there is another question that is from the ability of fluorides versus oxygen. Fluorine and oxygen both are electronegative elements, and if they are attached with some metal, they are going to show high oxidation state. But the ability of oxygen to stabilize this high oxidation state, the ability of oxygen to stabilize these high oxidation state exceeds that of fluorine. Okay, it exceeds that of fluorine. Why does it exceed that of fluorine? Because oxygen can form double bond, but fluorine cannot form double bond. ठीक है, ये आपके यहाँ पे दिया हुआ है. The ability of oxygen to form multiple bonds to metal explain its superiority. ठीक है ना, इसको याद रखिएगा, this line is important. Oxygen can form double bond, है ना, multiple bond oxygen form कर सकता है, but fluorine cannot, and that is why it is superior and has high ability to stabilize the high oxidation state for the metal atoms. यहाँ पे आप लोग ये देखिएगा, हाउ वुड यू अकाउंट फॉर द इंक्रीजिंग ऑक्सीडाइजिंग पावर. ठीक है, ये जो सवाल है ना, इवन अगर आपको कुछ नहीं आ रहा है, देन व्हाट यू कैन डू, यू कैन जस्ट आंसर एज द क्वेश्चन इज गिवन. क्वेश्चन में आपको सब कुछ दिया हुआ है, गिवन हाउ वुड यू अकाउंट फॉर द इंक्रीजिंग ऑक्सीडाइजिंग पावर. ऑक्सीडाइजिंग क्या बोल रही है, MnO4 नेगेटिव सबसे ज्यादा इसका ऑक्सीडाइजिंग पावर है. कब ऐसा हो सकता है, दिस इज ओनली पॉसिबल जब MnO4 के बाद अगर MnO4 का ऑक्सीडाइजिंग पावर है, इट हैज हाई ऑक्सीडाइजिंग पावर, दैट मींस MnO4 इज गेटिंग रिड्यूस्ड. सही है, ये आपको तो खुद सवाल से ही पता चल रहा है, आंसर भी देखने की जरूरत नहीं. MnO4 अगर ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा है इसका, दैट मींस MnO4 इज गोइंग टू गेट रिड्यूस्ड, एंड व्हाटएवर इज गेटिंग रिड्यूस्ड, है ना, जो भी इसका लोअर स्पीसीज विद लेस ऑक्सीडेशन स्टेट इज गेटिंग रिड्यूस्ड टू मोर स्टेबल स्पीशी. ठीक है, इस तरह से आप आंसर कीजिएगा. जब आप लोगों को देखिए एक्सपेक्ट, देखिए ये जो सवाल है ना आपका, इसके लिए आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए, इस कंप्लीट टेबल. ठीक है, तो समटाइम्स एनसीईआरटी इट एक्सपेक्ट्स यू टू रिमेंबर दीज ऑल थिंग्स. या तो आपको ऐसे याद हो, या फिर आप लॉजिक लगा लीजिए कि MnO4 इट इज having high oxidizing power. It is having high oxidizing power, that means MnO4 is getting reduced. और अगर इसका हाई ऑक्सीडाइजिंग पावर है, तो ये बहुत आसानी से क्या हो रहा होगा, बहुत आसानी से रिड्यूस हो जा रहा होगा. और आसानी से तब रिड्यूस होगा जब इसका लोअर स्पीसीज क्या हो, स्टेबल हो. सो रादर देन रिमेम्बरिंग दिस कंप्लीट थिंग ना, यहाँ पे देखिए MnO4 नेगेटिव में आपके पास Mn पे क्या चार्ज है, Mn पे चार्ज है +7. ठीक है, क्या चार्ज है यहाँ पे, +7 चार्ज. और उसके बाद अगर आप नीचे आइएगा तो इट इज व्हाट, नेक्स्ट इज व्हाट यू हैव MnO2. ठीक है, या फिर आपके पास Mn2O3, किसी में भी आ सकता है. so, Mn2 यहाँ पे MnO4 नेगेटिव या फिर MnO2 7, जो भी देखिए दोनों में आपके पास क्या है, +7 ऑक्सीडेशन स्टेट. +7 ऑक्सीडेशन स्टेट के बाद ये कहाँ आ रहा है आपके पास, MnO2 में आएगा. MnO2 में क्या है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट, इट इज गोइंग टू बी +4. ठीक है, +7 से ये कहाँ पे आ रहा है आपके पास, +4. +4 में अगर आप Mn को देखिए, 4s0 एंड 3d कितना हो जाएगा, ये 5 इलेक्ट्रॉन होता है ना, 5 यहाँ 2 यहाँ 2 है, 3d3. ठीक है, 3d3 में आप क्या होगा, T2g3 हाफ फिल्ड, है ना. सो एज यू कैन सी MnO2 इज गोइंग टू बी मोर स्टेबल. ठीक है, बट यू डोंट हैव टू रिमेंबर दिस, आपको ये याद करने की जरूरत नहीं है, आप बस इस तरह से लॉजिक लगा के लिख सकते हैं, वही आंसर है. दिस is due to the increasing stability of lower species to which they are reduced.
Now, ये वाला जो सवाल है, this is from electrochemistry only. ठीक है, these are more reactive and are oxidized by 1 molar H plus, and उनको क्या बोलते हैं, active metals बोलते हैं. Now magnetic properties में देख लीजिए. In magnetic property you have to, I hope you know diamagnetism and paramagnetism. Diamagnetism कब होता है? When you have all paired electrons. Para कब होता है? When you have at least one unpaired electron. And when you have large number of unpaired electron, then it is known as ferromagnetic. ठीक है? Substances which are attracted strongly are said to be ferromagnetic. In fact, ferromagnetism is an extreme form of paramagnetism. ठीक है? Ferromagnetism कुछ नहीं है, extreme form of paramagnetism. Diamagnetic substances are repelled by applied field. ठीक है? क्यों applied field से repel करता है? Because they have paired electron. Paramagnetic substances are attracted. ठीक है? ये difference है आपका, अगर आप बात करें magnetic field के हिसाब से. Now, magnetic moment is given by, this is magnetic moment. Its value is n into n plus 2, where n it is equal to number of unpaired electrons. And ये जो mu की unit होती है, unit is Bohr magneton. Given by Bm. ठीक है? They can ask you directly, ये आपके पास calculate the magnetic moment of a divalent. Divalent का मतलब क्या है? +2. In aqueous solution, if its atomic number is 25, so with atomic number 25, aqueous solution will have d5 configuration, 5 unpaired electron. The magnetic moment mu, it is equal to what? It is equal to 5 into 5 plus 2. ठीक है? इस तरह के सवाल आ सकते हैं आपके पास 1 मार्क्स में. Now formation of color. Formation of color जो है, this is explained in coordination compound. ठीक है? coordination compound में इसको explain किया हुआ है. I think देखिए, ये ना एक flaw है NCERT का. This DNF block is chapter number I think 8 है ना, और chapter number 9 है आपका coordination compound. And many a times they have reference chapter number 9. ठीक है? ऐसा कभी होता नहीं है. आप हमेशा chapter number 8 में आप chapter number 9 के बारे में कुछ लिख ही नहीं सकते, because chapter number 9 तो बाद में आएगा ना. But here you see, when an electron from lower energy d orbital is excited to higher energy d orbital, the energy of the excitation corresponds to a frequency of the light absorbed, unit 9. है ना? इन्होंने क्या दिया हुआ है? unit 9 का यहाँ पे एक रेफरेंस दिया हुआ है. If you see above, जो भी T2G का यहाँ पे, there is many places where they have referenced for unit 9. और यही वजह है that I teach coordination first and उसके बाद हम D and F block पढ़ाते हैं, because many things are related here. As you can see, हाफ फिल्ड T2G लेवल. अब T2G और EG लेवल की जो भी बातें सारी यूनिट 2, यूनिट 9 की है ना, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की है. सो इट इज इंपॉर्टेंट दैट यू लर्न कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स. तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो आप यहाँ से रिलेटेड मिलेंगी. वैसे तो बहुत सारी चीजें हैं जो रिलेटेड नहीं है, ठीक है, बट देयर आर सम थिंग्स व्हिच आर इंपॉर्टेंट, एंड वो सारी चीजें यूनिट 9 से रिलेटेड है. नाउ एंड आई हैव मार्क्ड दीस बिकॉज़ उन लोगों ने कभी कभी इन सब चीजों का पूछा हुआ है. ठीक है ना, दे हैव आस्क्ड दीस थिंग्स. हाँ, कैटालिटिक प्रॉपर्टीज के बारे में पूछ सकते हैं. Why do they have catalytic property? So this activity is ascribed to their ability to adopt multiple oxidation state and to form complexes. ठीक है, तो ये लाइन है. If they ask you why D block elements act as catalyst, ठीक है. Then they form interstitial compounds. Interstitial compounds में ये properties हैं, इनको याद कर लीजिएगा. They can ask you about the properties. Then there is alloy formation. I hope you know what is alloy. Alloy, and what is the use of alloy? Alloys, they are formed which are hard and have often high melting points.
ठीक है। द इंपॉर्टेंट एलाइज जिनके नाम आपको याद होने चाहिए, ब्रास विच इज अ मिक्स ऑफ कॉपर एंड जिंक, ब्रॉन्ज विच इज अ मिक्स ऑफ कॉपर एंड टिन। ठीक है, ब्रास एंड ब्रॉन्ज दोनों याद रखिएगा, कॉपर जिंक एंड कॉपर टिन। नाउ नेक्स्ट पार्ट, दिस इज इंपॉर्टेंट, द ऑक्साइड्स एंड ऑक्सो एनायंस ऑफ मेटल्स। यहाँ पे आपके पास एक जो है पोटेशियम डाइक्रोमेट, ठीक है, पोटेशियम डाइक्रोमेट, एंड देयर इज पोटेशियम परमैंगनेट आल्सो, है ना, डाइक्रोमेट एंड पोटेशियम परमैंगनेट। इनमें आपके पास दोनों के दोनों क्या है, बोथ ऑफ दीज आर व्हाट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, पोटेशियम डाइक्रोमेट एंड पोटेशियम परमैंगनेट, बोथ ऑफ देम आर व्हाट, दे आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अच्छा, एक और चीज, पोटेशियम डाइक्रोमेट के अलावा आपके पास क्या हो सकता है, यू कैन ऑल्सो हैव सोडियम डाइक्रोमेट, है ना, उसी तरह से वहां पे सोडियम हो सकता है, बट जनरली दे विल आस्क यू अबाउट पोटेशियम डाइक्रोमेट एंड पोटेशियम परमैंगनेट। प्रिपरेशन उतना ज्यादा नहीं, ठीक है। देखिए, सोडियम डाइक्रोमेट, है ना, पोटेशियम डाइक्रोमेट हो चाहे सोडियम डाइक्रोमेट हो, दोनों ही के दोनों इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एंड कलर इज इंपॉर्टेंट। पोटेशियम डाइक्रोमेट का कलर क्या होता है, ऑरेंज क्रिस्टल्स, और यही वाला है आपके पास यहाँ पे इस कलर में। व्हेन यू सी हियर क्रोमियम, वेयर इज दैट, पोटेशियम, अच्छा यहाँ पे उन्होंने Cr का, that oxidation state is not given there, ठीक है। These structures are important for chromate and dichromate, ठीक है, क्रोमेट और डाइक्रोमेट में दोनों में ही देखिएगा, लेकिन क्रोमियम इट इज गोइंग टू हैव टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, ठीक है। अगर इसकी सिर्फ बात करें तो ये अभी भी टेट्राहेड्रल है, ये अभी भी टेट्राहेड्रल है, बट इन क्रोमेट you have only one chromium, in dichromate you have two chromium, and there is a oxygen bond which is a bridge bond here. Now one important, these two reactions are important, ठीक है, कि Cr2 CrO4 2 नेगेटिव जो है H प्लस के साथ कैसे रिएक्ट करता है, एंड Cr2O7 2 नेगेटिव ये बेस के साथ कैसे रिएक्ट करता है, ठीक है। प्लीज रिमेंबर, द क्रोमेट्स एंड डाइक्रोमेट्स आर इंटरकन्वर्टेबल इन aqueous solution डिपेंडिंग अपॉन द pH ऑफ द सॉल्यूशन। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम एंड क्रोमेट एंड डाइक्रोमेट इज सेम, दोनों में क्या आपके पास क्रोमेट हो चाहे डाइक्रोमेट हो, दोनों में आपके पास ऑक्सीडेशन स्टेट सेम है। प्लीज रिमेंबर, एसिड में कौन रिएक्ट करता है, इन एसिडिक स्टेट you have chromate, and in basic state you have dichromate, ठीक है। they can ask you about this also, in acidic condition आपके पास पोटेशियम डाइक्रोमेट के कौन से, क्या क्रोमेट रिएक्ट करता है या डाइक्रोमेट रिएक्ट करता है, ओके। now sodium and potassium dichromates are strong oxidizing agent, and then this reaction is important। हाँ, ये रिएक्शन देख लीजिए, this is important, Cr2O7 2 negative plus 14H plus 6 electron gives 2 Cr3 positive plus 7H2O। अब इसका रिएक्शन किसी के साथ भी हो जाएगा, फॉर एग्जाम्पल आपके पास आ गया, गिव बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन ऑफ K2Cr2O7 विथ, आप बताइए किसके साथ रिएक्ट करें, आयोडीन के साथ, H2S के साथ, या फिर टिन के साथ, या फिर Fe के साथ। दीज आर द 4 रिएक्शंस। अच्छा, Fe का दिया हुआ है, ठीक है ना, Fe का तो यहाँ पे दिया हुआ है, Fe का नहीं करते हैं, किसी और का बताइए, Fe का किया हुआ है, टिन का, H2S का, आयोडीन का, या फिर, हाँ 3 ऑप्शन है आपके पास, टेल मी, विल राइट अ बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। टिन, ओके। सबसे पहले आप देखिए, आप इसका लिख लीजिएगा, दो रिएक्शंस होंगे, है ना, एक में आपके पास क्या होगा, एक में ऑक्सीडेशन होगा, दूसरे में रिडक्शन हो रहा है। पहले में देखिए आपका क्या हो रहा है, Cr2O7 2 नेगेटिव का रिडक्शन हो रहा है, सो राइट दैट इक्वेशन, Cr2O7 2 नेगेटिव, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो इसका क्या होगा, इसका हमेशा रिडक्शन ही होगा, प्लस ये हमेशा आप इतना ही कम से कम याद रखिए, ठीक है ना, पूरा आपको इक्वेशन याद रखने की जरूरत नहीं है, आप इतना याद रखिए, Cr2O7 2 नेगेटिव, ये रिड्यूस हो जाता है किसमें, 2 Cr3 पॉजिटिव, ठीक है, इतना ही याद रखना है आपको, इसके अलावा आपको कुछ नहीं याद रखना, ठीक है।
सीआर का आपको यही याद रखना है, और फिर आपको क्या याद रखना है, एसएन कहां से कहां कन्वर्ट होता है, SN2 पॉजिटिव से SN4 पॉजिटिव। अब मान लीजिए SnCl2 दिया हुआ है, SnCl2 दिया हुआ है, यानी कि आपके पास क्या दिया हुआ है, SN2+ दिया हुआ है, you will be given in this form। आपको ऐसे नहीं देंगे Cr2O7 2 नेगेटिव एंड SnCl2। अब ये बताइए, can all of you understand how I have written Cr2O7 2 negative and why I have written SN2 positive? Yes or no, please tell me। इतना सबको समझ में आ रहा है, हाँ या ना? Yes or no guys? Yes, sir. है ना, K2 है, K2 अगर निकल जाएगा तो you will be having 2 नेगेटिव चार्ज। Cl2 में आपके पास क्या है, 2 नेगेटिव निकल जाएगा तो क्या बचेगा, +2 बचेगा। ओके, नाउ दोनों को अलग अलग करके देखेंगे, ठीक है। एक का क्या हो रहा है यहाँ पे, one is getting reduced and the other is getting oxidized। Now tell me, यहाँ पे हम 2Cr3 पॉजिटिव लिख सकते हैं, बिकॉज हियर यू हैव 2Cr, है ना, Cr2O7 2 नेगेटिव, तो आपको क्या मिलेंगे, 2 क्रोमियम कम से कम मिलेंगे, है ना। अब ये बताइए यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है Cr का, Cr2O7 2 नेगेटिव, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट, कैलकुलेट करके बताइए। 7 जी कैलकुलेट कर रहे हैं ऑक्सीडेशन स्टेट, या फिर हम कैलकुलेट करें, बताइए। आई थिंक दोस्त हु हैव डन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स उनको तो कम से कम आ रहा होगा। Raise your hand if you have no idea how to calculate the oxidation state of Cr in Cr2O7 2 negative। अगर कर पा रहे हैं तो ठीक है, वरना हम बता देते हैं। Cr2O7 2 negative oxidation state, yes Sara, tell me, Sara, did you calculate? Yes Sara, Razan, Rehan, Fatima, anyone? ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं निकला, फातिमा। यस फातिमा, टेल मी। रेहान करेक्ट, रजान, फातिमा, सारा, व्हाट अबाउट यू गाइस? फातिमा, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Cr। अरे हाँ ना, कुछ तो बोलिए, क्या हो गया। हाँ रजान करेक्ट, फातिमा Yes, sir. नहीं निकल रहा आपसे, No, sir. भूल गए। सारा, व्हाट अबाउट यू, सारा पार्कर? 12. बट 2 है ना, देखिए ऐसे होगा ना, 2 क्रोमियम है तो 2x + 7। ऑक्सीजन का क्या होता है फातिमा, ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी फातिमा, ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, भूल गए, देखिए 1 महीने क्लास नहीं है, सब कुछ भूल गई फातिमा। ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं यार, -2 होगी ना, इट इज इक्वल टू -2। ओवरऑल चार्ज जो भी है उसके बराबर हो जाएगा, अगर 0 रहता तो 0 लिखते, -2 है तो -2 लिखा है। सो 2x इट इज इक्वल टू व्हाट, 7 2 14 इधर जाएगा तो it will become what, +14। 14 - 2, this will be equal to 12।
2x is equal to 12, so x will be equal to 6. सारा समझ में आया बात? Yes or no, please tell me, सारा? Yes. ठीक है, so it is +6 यहाँ पे, and please remember +6 से कितना जा रहा है ये? +6 to +3 ना? What is the change? Change in oxidation state is equal to how much? 3. Change in oxidation, हाँ 3 का 3 ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रहा है, बट इट इज हैपनिंग फॉर 2 क्रोमियम. यस और नो? करेक्ट. Yes. तो ये हो रहा है 3 पर क्रोमियम. 3 है आपके पास एक क्रोमियम के लिए, तो 2 क्रोमियम के लिए हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी बताइए? हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स डू वी नीड हियर? वी नीड 6 इलेक्ट्रॉन्स. यस और नो? एक क्रोमियम में 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, +6 से +3 के लिए. 2 क्रोमियम के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 6 electrons. 6 इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है भाई, सबको आई होप समझ में आया होगा. सबसे पहले हमने क्या देखा? कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, कहां से? ऑक्सीडेशन स्टेट से. सो Cr2O7 2 negative plus 6 electron is going to give you 2 Cr 3 positive, है ना? अच्छा, यहाँ पे अगर आपके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे भी आपके पास कितना होना चाहिए? ये देखिए, व्हाट इज द चेंज हियर? दिस चेंज इज इक्वल टू व्हाट? 2, है ना? अब इन दोनों को किससे मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 इलेक्ट्रॉन का चेंज हो जाएगा, बताइए जरा. यहाँ पे इट इज गोइंग टू गिव यू 2 इलेक्ट्रॉन्स. करेक्ट. बताइए कितने से मल्टीप्लाई करते हैं? 3 से मल्टीप्लाई करते हैं दोनों को. Yes or no? If I multiply this whole equation, then I will get here 6 electron. Yes or no? Yes, sir. ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या करना है? First of all, you have to calculate how many electrons are being used in each of these equations. Then you have to first of all किसको बैलेंस करना है? इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस करना है. So when I will balance this electron, I will get here 3SN4 positive, and you will get 6 electrons. Okay, you will get 6 electron. Now, next is चार्ज को आप यहाँ पे बैलेंस कीजिए. What you have to balance now? You have to balance the electrons को बैलेंस कर दिया, दोनों को ऐड कर दीजिए. कम भी दोनों को ऐड कर दीजिए. Once you have balanced the equation, add both of these. You have 3SN 2 positive gives 3SN 4 positive plus 6 electron. ठीक है, आपने दोनों इक्वेशन को बैलेंस कर दिया. 6 इलेक्ट्रॉन कैंसिल. Cr2O7 2 negative plus 3SN2 positive gives 2 Cr3 positive plus 3SN4 positive. अब यहाँ पे हम लोग बैलेंस करेंगे चार्ज को. ठीक है, Cr2 पॉजिटिव में कितना चार्ज है? -2. 3 into 2 पॉजिटिव. यहाँ पे आपके पास क्या है? 2 into 3 पॉजिटिव प्लस, और यहाँ पे 3 into 4 पॉजिटिव. Can all of you see the charges? Yes or no? Please tell me. चार्जेस दिख रहे सबको? हाँ या ना? Yeah. है ना? तो ये 3 into 2 क्या हो जाएगा आपके पास? +6. ये जाएगा +6, तो ये कितना हो जाएगा? 4 3 से 12 +12 हो जाएगा. इन दोनों को अगर आप कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? +4. इन दोनों को जब आप ऐड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा आपके पास? +18. कैन ऑल ऑफ यू सी दैट नाउ? यस और नो? प्लीज टेल मी. हाँ या ना, जल्दी बताइए. +4 टोटल चार्ज है, यहाँ पे +18 टोटल चार्ज है. सबको दिख रहा है? हाँ या ना? Yes, sir. ठीक है, ये हमने किया 2 into 3 पॉजिटिव ना, 3 into 4 पॉजिटिव, बिकॉज 2 क्रोमियम है, 3 हमारे पास 10 है. 2 क्रोमियम विद 3 पॉजिटिव चार्ज एंड 10 विद 4 पॉजिटिव चार्ज. ठीक है, अब यहाँ पे बैलेंस क्या करना है? चार्ज बैलेंस करना. ठीक है, व्हाट यू हैव टू बैलेंस हियर? यू हैव टू बैलेंस द चार्ज हियर. आपके पास 2 केसेस हो सकते हैं. आपको या तो बोलेंगे वो बेसिक केस है, या फिर आपके पास एसिडिक केस है. ठीक है, इफ यू आर इन द बेसिक मीडियम, यू हैव टू ऐड OH नेगेटिव. ठीक है, नेगेटिव चार्ज मिल रहा है आपको. अगर एसिडिक है तो क्या रहेगा बताइए जरा? इफ यू हैव एसिडिक मीडियम, देन व्हाट कैन यू ऐड? टेल मी. एसिडिक मीडियम में क्या रहेगा आपके पास? टेल मी गाइस, व्हाट विल बी देयर इन एसिडिक मीडियम? अरे एसिड होता है तो क्या रहता है सोल्यूशन में? क्या रहेगा? H+. हाँ, वेरी गुड, H+ रहेगा. ठीक है, मोस्ट ऑफ द केसेस दे विल आस्क यू टू बैलेंस इन एसिडिक कंडीशन ओनली. अगर आपके पास एसिडिक कंडीशन है, दैट मींस यू कैन ऐड H+ इन द रिएक्टेंट. कहीं आपके पास यहाँ पे अगर एसिडिक मीडियम है ना, H+ अगर आपको ऐड करना है तो कहाँ ऐड करेंगे बैलेंस करने के लिए? बताइए, पॉजिटिव चार्ज किधर कम है? रिएक्टेंट के साइड या फिर प्रोडक्ट के साइड? वेयर डू यू हैव लेस पॉजिटिव चार्ज? टेल मी. Reactant के साइड. रिएक्टेंट के साइड में. तो रिएक्टेंट साइड हम कितना H+ डाल दें तो बैलेंस हो जाएगा? हाउ मच H+ शुड आई ऐड? टेल मी.
हाउ मच H plus should I add? कितना H plus ये बताइएगा आपको, कितना H plus डाले तो 18 हो जाएगा। यहाँ पे एक H plus में एक चार्ज है ना, बताइए कितना चार्ज डालना पड़ेगा। ये तो बहुत आसान है, केमिस्ट्री नहीं, ये तो मैथ्स है, बिल्कुल ना, सिंपल मैथ्स है। आपके पास 4 प्लस है, आपको 18 प्लस करना है, कैसे होगा? टेल मी गाइस, हाउ मच H plus should I add? सारा 1। अरे भाई, अगर आप 1 H plus डालेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 होगा ना, आपको 18 करना है। 12 सर। 14. 12, 14। एडिशन भी खराब है क्या बच्चा है आप लोग की? हाँ, 14 डालेंगे तब ना होगा। 14 plus 4 is equal to 18। क्लियर है सबको? ये सोनो प्लीज। ठीक है, आपने H+ डाल दिया। अब आपको यहाँ पे जानते क्या करना है, अब बस वाटर ऐड कर देना। इफ यू हैव 14 H+, यू विल ऐड 7 H2O मॉलिक्यूल्स। ठीक है, 7 H2 कैसे, देखिए 7 प्लस 7 2 14 H+ हो गया और 7 ऑक्सीजन। अब देख लीजिए कंप्लीट, एवरीथिंग विल बी बैलेंस्ड हियर। काउंट करके देख लीजिए, एवरीथिंग विल बी बैलेंस्ड। Is everything balanced? Yes or no? Please tell me. Yes, sir. ठीक है, देखिए हमने कहां से स्टार्ट किया था, आपको बस क्या याद रखना चाहिए, दो चीज। Cr2O7 2 नेगेटिव से आपको मिलता है 2 Cr3 पॉजिटिव, और Sn2 पॉजिटिव से आपको क्या मिलता है, Cr27 कैसे ऑक्सीडाइज करता है, Sn4 पॉजिटिव एंड 2 इलेक्ट्रॉन है ना, ये तो दिख रहा होगा 2 इलेक्ट्रॉन। फर्स्ट आपको क्या बैलेंस करना है, बैलेंस द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स using oxidation state. Second, balance the charge using H+ और OH नेगेटिव। ठीक है, बस दो चीजें आपको ध्यान रखनी। ठीक है, यू रीडू दिस थिंग, इसको स्क्रीनशॉट लेके खुद से करने की कोशिश कीजिए, एंड देन यू कैन वॉच द रिकॉर्डिंग इफ यू हैव एनी डिफिकल्टी। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे। एंड सेम आपके पास देखिए, ये रिएक्शंस आप देख लीजिएगा KMnO4 नेगेटिव के लिए, KMnO4 के लिए एसिडिक कंडीशन में, न्यूट्रल या फिर अल्कलाइन सॉल्यूशन। ठीक है, दीज आर द रिएक्शन दैट यू हैव टू सी। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया आपने? ठीक है, प्लीज टेक दिस स्क्रीनशॉट एंड रीडू दिस बैलेंसिंग वाला सवाल आ सकता है। ओके, राइट अ बैलेंस केमिकल रिएक्शन फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ दिस टू दिस यूजिंग K2Cr2O7 या फिर KMnO4। For both of them you have to use the same method, balance the number of electron using oxidation state, then balance the charge using H+ or OH negative. ठीक है, when you add H+ and OH negative, then add the number of corresponding water molecules also। ऐसा नहीं कि water molecules भूल दीजिएगा। ठीक है, लास्ट स्टेप में आपको वाटर ऐड करना पड़ेगा। add H2 as required, either in reactant or the product, जहां पे भी आपके पास रिक्वायरमेंट हो